मैन ऑफ द मैच। नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद में भारत ने दर्ज की जीत, और क्या जीत रही। जीता सिर्फ मैच ही नहीं, सीरीज भी जीती। और उस जीत में और मैच को जल्दी खत्म करने में किसका ज्यादा हाथ रहा, भारतीय टीम का या फिर अंग्रेजी टीम का? यही डिस्कस करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हम हाजिर हैं अपना प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है मैन ऑफ द मैच। मैं हूं कनिष्का। मैं हूं अमित अरोरा। बहुत बहुत बधाई आपको कनिष्का जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। And congratulations to everyone who's tuned to All India Radio for the program Man of the Match. Not only India has won the series 3-1, they've also finalized their berth against New Zealand for the inaugural edition of the ICC World Test Championship. A big congratulations to Venkat Sundaram, former cricketer, and Chandrasekhar Luthra, senior sports journalist. Welcome. Dhanyawad. And congratulations to the Indian team. Yes. For their facile win and for their maiden entry into the finals of the World Test Cricket Championship. Absolutely. How big is this moment, Shekhar? Big, definitely, and especially when you know if you lose, you will be out. Australia will be there, and without playing. And you have won against Australia, so that was somewhere, this is back of the mind. This also troubles you, but definitely it's a great win. But more than that, I think it's a great surrender by English team after winning that first match. So I think they have lot to ponder over what went wrong during this tour, especially after getting so much acclimatized and also winning the series in Sri Lanka. Lot to ponder to that. जी, हमने जो ये मैच है पूरी एक इनिंग्स से जीता है, उस पर क्या कहेंगे? बड़ी अचीवमेंट। पूरी एक इनिंग आधी भी हो सकती थी। जी, हो तो अब कुछ भी सकता है, ऐसा लग रहा है। बहुत अचीवमेंट है, क्योंकि इंग्लैंड जो है, चाहे युवा खिलाड़ी से खेल रहे हो कुछ हो, इंग्लैंड इज इंग्लैंड। उनको हराना आसान नहीं है, और इनिंग से हराना तो मेरे को याद नहीं आ रहा हमने कब इंग्लैंड को इनिंग से हराया पहले। ये भी हमें रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। और मैं समझता हूँ कि ये विकेट जो इतना ख़राब नहीं था, अच्छा विकेट था। 200 रन उन्होंने भी बनाया था। दे शुड हैव स्कोर्ड मोर। ये आफ्टर विनिंग द टॉस 200 रन पे आउट होना, समेटना इनको, आई थिंक समवेयर दे लॉस्ट द बैटल देयर इटसेल्फ। जी बिल्कुल। इंडिया स्कोर्ड 365 बनाए, एंड देयरफॉर आई फील दैट कि द फर्स्ट इनिंग्स नॉन परफॉर्मेंस बाय द इंग्लिश टीम आफ्टर विनिंग अ क्रूशियल टॉस, that has counted in this match. Absolutely. And of course, our statistician Ravikant Srivastav and scorer Kishore Lavne have given us the final scorecard once again for us to present to you. And 135 is what England could muster in the second innings, although that was punctuated by 50 runs, half century by Daniel Lawrence, putting in some effort towards the later part, but it was too late. And that meant that India has won by an innings and 25 runs. Before we go to the Narendra Modi Stadium presentation ceremony, very quickly to both of you, Shekhar, beginning with you, who will be your man of the match first? My man of the match is simple, Rishabh Pant. If he had not scored those crucial runs yesterday, I think the match was quite balanced till that particular moment. Okay, Venkat? It's a difficult one, because the spinners have also taken a lot of wickets, and it depends who's the man of the series. Okay. Normally the same person doesn't get both. So let's answer that, because that's my next question. I think Rishabh Pant easily is the man of the series. Okay, then in that case, they might go for a spinner, one of the spinners, maybe Rafi Chandran Ashwin. Akshar Patel has also taken a lot of wickets. क्या joint रूप में भी दे सकते हैं शेखर? दोनों को दो, अक्षर अश्विन? There has instances जब joint भी मिला, लेकिन I think Venkat has a point कि one of them has to be either Ashwin could be also be a man of the series. He has taken almost more wickets. अक्षर ने, लेकिन एक चीज और है, अक्षर ने 3 मैच खेले हैं, अश्विन ने एक ज्यादा खेला, अक्षर ने फिर रन भी बनाए, 100 किए। तो शायद फिर मैन ऑफ द सीरीज अश्विन and who knows. I think these two will share who gets more. So you're not counting Shekhar then Rohit in the picture, or even Joe Root for that matter? No, not at all. Joe Root has flopped after that first innings. He has not scored. If he had scored 5 wickets. But again, he's not a bowler. This is again, if Rishabh Pant comes in to bowl, then counting his wickets, no. That's always been, there were no spinners, so he was there, and he Spinner by default. And अगर जिता देते मैच तो डिफरेंट बात होती है, वो 5 और 4 का फर्क भी पड़ेगा। अमित, आपको कुलचा तो पता ही होगा, हमारे 2 प्लेयर्स को कहते हैं। अगर अक्सर और अश्विन का नामकरण आपको करना हो, क्या करेंगे? सोचिएगा। अश्विन अक्सर विकेट लेते हैं। अरे वाह, क्या बात है, पूरी टैगलाइन हो गई। जी बिल्कुल। लेकिन ये इज दिस द न्यू बॉलिंग कॉम्बिनेशन दैट स्टूड आउट फॉर इंडिया?
This is the new combination in India. In India, When we okay. go to Lords, the combination will certainly change. That will be a very interesting selection. I would be very keen to observe whether we're going to strengthen our batting, whether, of course, our seam bowling will have to be strengthened. I think we'll play with 3 seamers and 1 spinner there. Okay. That's what traditionally we do in Lords. We may go with 5 bowlers again. So these are very interesting combinations. And June, the middle of June, normally the weather is good. It's not very cold and it's bright and sunny in London. So I think it should be interesting. It'll be challenging to see what team we play, because I think our batting, top order batting, needs to be strengthened. Our top order batting is shaky, as we have seen in this series in India. In Lords, at Lords, if the wicket is seaming a bit, if it's windy and cold and maybe overcast. So in England, the weather can change very rapidly. Then your top order will be tested. And the players who at the lower end of the order who are succeeding, in English conditions, they may struggle, because again, Rishabh has played in England. Akshar Patel, I don't think, has played much cricket in England. Yes. Washington Sundar again has not played much cricket there. So how we handle that, whether Jadeja will be back, all these things, permutations, combinations will have to be carefully studied. Right. So you've heard the opening comments and thoughts from our experts, and you can also call us and ask any questions or express your views about today's match and in this series. Our phone numbers are 234211083 and 234211084. And with that, we have few callers with us who are joining us. Let's talk to the first caller. Hello. हेलो मैडम जी, नमस्कार। जी नमस्कार। सतीश गुलियानी, दिलकुशा मार्केट, जलंधर, पंजाब से जी। बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत मुबारकें जी। जी आपको भी बधाई। आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत की जीत? लड्डुओं का डब्बा मंगाया मैंने। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। मैंने आपको परसों बोल दिया था ना कि ये जो मर्जी कर लें, जीतेगा इंडिया ही। जी बिल्कुल, आपकी जो भविष्यवाणी है वो सच हो गई। कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? सवाल मैडम ये है कि सब बहुत अच्छा खेले हैं जी, और यही दुआ करते हैं कि ऐसे ही खेलते रहें और अपने देश का नाम उज्जवल करते हैं, रोशन करते रहें। और आप लोग ऐसे ही हंस के हमें, जैसे अभी हंसे हैं ना सर जी, ये ऐसे ही हंस के हमें मुबारकबाद देते रहें। और आपको भी लड्डुओं का डब्बा भेज रहा हूँ जी। अरे वाह, बहुत खूब, शुक्रिया सतीश जी। ये हमारे बलवीर जी आ रहे हैं आपके पास लेके। अरे वाह, ये तो बिल्कुल दिल खुश करने वाली बात आपने कही है कि अगर लड्डू का स्वाद सभी को मिल जाए, वाकई, क्योंकि भारत यहाँ पे सीरीज जीता है। एक और श्रोता है फोन लाइन पर। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार अमित सर। जी नमस्कार। मैं विकास कुमार बोल रहा हूँ, पानीपत हरियाणा से। जी मुबारकबाद। विकास जी के पास सॉफ्टवेयर है। मैंने उस दिन भी कहा था इनका फोन जरूर लगता है। विकास जी बहुत बहुत बढ़िया, आप बहुत लकी हैं लगता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये तो बस आपके लिए पैशन है। तो सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस थे कि एक तो इंग्लैंड की जो रोटेशन पॉलिसी है कि एक बार उन्होंने सीरीज स्टार्ट होने से पहले बोला था कि हम तो एशेज के लिए अपने बेस्ट प्लेयर्स को बचा के रख रहे हैं। तो मतलब क्या इंग्लैंड को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना चाहिए कि भाई ये रोटेशन पॉलिसी इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड के लिए भी सही नहीं है? और एक क्वेश्चन मेरा कि जिस हिसाब से अभी आईपीएल काफी लंबा चलेगा और उसके बाद फिर एकदम से हम इंग्लैंड में खेलने के लिए जाएंगे, वहां पर चैंपियनशिप का फाइनल, तो विराट कोहली किस प्रकार से तैयारी करें? क्योंकि वो एकदम से शिफ्ट करेंगे और पहले ही उनकी फॉर्म नहीं है। तो जो हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, तो क्या हम हर बार लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन पर निर्भर रह के ये सीरीज या मैचेस कब तक जीतेंगे? आखिर हमारे ऊपर के बैट्समैन को कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी शुक्रिया विकास जी। यहाँ पे जो वेंकट विकास बहुत ही थॉटफुल, वेरी थॉटफुल, बिकॉज आप ये देखिए कि टेस्ट मैचेस की जहाँ तक बात है तो जून में तो ये फाइनल मुकाबला होगा ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, भारत बनाम न्यूजीलैंड। उसके बाद 4 अगस्त से 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला होगी जब भारत इंग्लैंड दौरे पे जाएगा। लेकिन बीच में गैप है, आईपीएल है, तो सीरीज भले जीती है लेकिन विराट के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं उससे पहले। विराट नहीं, मैं तो समझता हूँ सारे बैट्समैन जो हमारे हैं उनके अगेंस्ट चुनौती है। आप देखिए पुजारा भी एक मैच में भी आउटस्टैंडिंग 100 तो दिखा नहीं उनका सीरीज में, और बट ही इज़ अ गुड प्लेयर, क्रूशल प्लेयर है। हमारा जो ओपनिंग बैट्समैन है गिल, वो कंसिस्टेंट नहीं रहे सीरीज में। पिछले सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में अच्छा किया, ये युवा प्लेयर है, लेकिन ऐसा है कि ये टेस्ट क्रिकेट है, ये हर मैच में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये 4 फेलियर के बाद 1 सक्सेस नहीं चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर भी प्रेशर है, रहाणे के ऊपर प्रेशर है। रहाणे इस सीरीज़ में तो ही हैज़ नॉट स्कोर्ड। तो इसी आप ये देखिए कि आपका टॉप ऑर्डर के 5 प्लेयर
और शेकी एक मैच में है. रोहित आउट ऑफ द लॉट हैज बीन फेयरली कंसिस्टेंट and I like the way he played this innings. It was a test of his character. He batted to tea and he changed his natural game of aggression and stayed at the wicket. Gee. So I think a lot of introspection is required. Gee. Right now, today, if you're playing international cricket and you're playing all formats, you have to be ready for IPL and BBL and all these Trinidad League and Pakistan League and I don't know which all league, but that's cricket today. And you cannot say that ये वो T20 के बाद टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलेंगे. या तो आप T20 खेलिए या टेस्ट क्रिकेट खेलिए. जरूरी थोड़ी कि आप सब खेलें. That is up to the selectors. So you have to perform. Your performance will be watched and assessed depending on how you play in particular form of the game. शेखर, विराट कोहली के लिए कितना मुश्किल है? उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा कि उन्हें भी पहले ही फॉर्म जो है उनकी अच्छी नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर फॉर्मेट्स चेंज और कप्तान भी हैं, कितना प्रेशर रहेगा? But the question is, who is going to bell the cat? There is nobody. I have not read anywhere. I have not heard about that. Somebody is questioning him. I mean, point is, he's your top batsman. But the point is, unless and until you put pressure on your captain to perform, you know, like has happened in so many times in the history of Indian cricket. So point is, he's your captain. He's going to lead you. Whether he clicks or not, the entire series has gone. He has only scored one good score. And otherwise, I think it's same with Rahane. Rahane has won a series in Australia, but after that, what has happened? Are you going to give the same kind of rope to each and other players of your team? Is it going to happen with the Washington Sundar if he fails after these 2 great knocks for next 8 innings? I don't think so. So there are 2 types of players. One are settled, one are you don't want to get them settled in your team. So there are so many instances. During Dhoni's time, you know, Rahane was unsettled for his entire, you know, during that career. So it's been a problem, but again, as I have said, there has to be somebody there in the administration or in the selection panel to talk to Kohli about his form. Ask him probably not to concentrate on IPL, which is not going to again happen because he's the captain there. It is not a switch on or switch off that, you know, you switch off your lights and suddenly you become a test player. No, you have to carry your form, and your form is as good as your last innings. So that's been a problem there. जी, इस समय कुछ और श्रोता हैं अपने सवालों के साथ. हेलो. हेलो, नमस्कार जी. नमस्कार. बलबीर सिंह पटियाल बोल रहा हूँ जी, कपूरथला पंजाब से. जी बलबीर जी, कंग्रेचुलेशंस. हाँ जी, पहले तो मेरी तरफ से, और जैसे गुलियारी साहब ने कहा, अभी मेरे मित्र हैं वो आपको बहुत बहुत बधाई हो. और मैं अभी चलने वाला हूँ यहाँ से दिल्ली के लिए, लेके आऊँगा आपके लिए. और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे पिछली मैच के दूल्हा जो थे ना, वो अक्षर पटेल थे जी. इस मैच के दूल्हा जो है ना, अश्विन बन गए हैं. तो जैसे ओपनिंग जो शुभमन गिल से कराई जा रही है ना जी, वो किसी और को चुनना चाहिए अब तो. जी जी, शुक्रिया आपके सवाल के लिए. एक और श्रोता. हेलो. हेलो. हेलो, नमस्कार. नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं शिवशंकर सिंह बात कर रहा हूँ, दिल्ली नागलोई से. जी शिवशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में. बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी, पहले तो भारतीय टीम को बधाई कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है. और ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इतना ही कहूंगा कि मैम अगला जो टेस्ट होगा भारतीय टीम को, तो कड़ी परीक्षा न्यूजीलैंड से होगा, वो उसमें मजा आएगा. लेकिन जी, बहुत अच्छी बात आपने रखी. जरूर अपने एक्सपर्ट जी. और मेरा क्वेश्चन है चंद्रशेखर सर से जी, कि अब जब भारतीय टीम जो अब टेस्ट श्रृंखला तो खत्म हो गई, अब इस मैच के बाद छोड़ दीजिए, अब इस मैच में जो भी रही भारतीय टीम जीत गई, जो भी कमियां हुई उससे छिप जाएंगे. लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे अभी 5 मैच का T20 श्रृंखला आ रही है, तो जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड गई थी तो 5 मैचों की श्रृंखला जीत कर आई थी, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या भारतीय टीम एक बार फिर 5 मैच से क्लीनशिप कर सकती है? जी चलिए, ज़रूर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे. फिलहाल थोड़ी देर बाद फिर से कॉलर्स से जुड़ेंगे. अब जाते हैं दोबारा अपने एक्सपर्ट्स के पास. एक सवाल पूछा उन्होंने शेखर, हमारे जो कॉलर थे, कि शुभमन गिल जो हैं उनकी जगह क्या किसी और को देखना चाहिए ओपनिंग के लिए? देखिए, डिपेंड करता है. मैंने पहले भी कहा, 2 तरह के प्लेयर टीम में होते हैं. जिसको कि आपके सेलेक्टर्स, आपका कप्तान बहुत बैक करता है. दूसरा वो जो हमेशा एज पे रहते हैं, अच्छा करें बुरा करें, सिर्फ मौका मिलते ही उनको बाहर फेंक दिया जाता है. शुभमन गिल एंड मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो किस तरफ है किस तरह, लेकिन वो ही इज़ इन द स्कीम ऑफ थिंग्स. वो पृथ्वी शा, ये 2 ओपनिंग जो जोड़ी है, ये स्कीम ऑफ थिंग्स में फॉर ए लॉन्गर टर्म.
अगर इनमें से कोई भी सेट होगा जो अभी ये लग रहे हैं बहुत एक्साइटिंग है, बाउंसी ट्रैक्स पे बहुत अच्छा खेल लेते, यहाँ भी एक इनिंग अच्छी खेली, उसके अब फ्लॉप होते गए, कंसिस्टेंट नहीं है, तो इनको एक थोड़ा सा लॉन्गर रोप जरूर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स। तो अब उसमें इनको देखिए जगह तो बनानी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि आप खेलते रहिए और अनगिनत आपके फेलियर होंगे, तो उसमें अब आपको जल्दी अडॉप्ट करना है। आपको जिस तरह की आप नॉक्स खेलते हुए आ रहे थे, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, अच्छी नॉक्स खेल रहे हैं, सिर्फ आपको कंसिस्टेंट रहना है और अपने ऊपर विश्वास करना है। यू हैव टू बिलीव इन योर ओन कैपेसिटी, योर ओन परफॉर्मेंसेस। जी बिल्कुल, लेकिन हमने उप कप्तान रहाणे की बात की, भले रन शायद नहीं बने उतने बल्ले से, लेकिन आज भी अगर हम देखें, चाहे जैक क्रॉली, बेन फोक्स, जैक लीच का विकेट हो, तो जो कैच अच्छे कर रहे हैं, रिव्यू भी जाता है लेकिन उनके हाथ में होता है कैच, तो काफ़ी अच्छे कैचेस रहाणे द्वारा। वेरी क्रूशल प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर है। जब भी टीम क्राइसिस में होते हैं तो वो रन बनाते हैं, लेकिन जैसे भी गिल की बात हो रही थी कि ही इज प्रॉमिसिंग इज ओके, बट ही हैज टू वर्क ऑन हिज फॉल्ट्स। ही इज बिफोर द बॉल इज बोल्ड ही इज मूविंग अक्रॉस, बट ही इज नॉट मूविंग बैक, ही इज मूविंग अक्रॉस, दैट इज वो क्रीज पे ही हैं। तो जब वो आगे आते हैं तो हाफ को ऑफ होते हैं, बचली क्रीज पे होते हैं, इसीलिए इनकमिंग बॉल पे वो आउट हो रहे हैं। सेकंड थिंग, ही इज नॉट रीडिंग द बॉलर। बॉलर कौन सा बॉल बाहर निकाल रहा है, कौन सा बॉल अंदर आ रहा है, he must watch the seam movement very carefully. Yes. And for that he must watch the grip of the bowler. These are things he has to do. Similarly Rahane, similarly Kohli, and ये देखिए जितने महारती हैं वो महारती हैं जरूर, उसमें कोई शक नहीं है, but the faults are the same. Yes. If Kohli is getting out periodically, fishing outside the off stump, he must know where is off stump and try and avoid that ball. Most teams get him out in that slip area early on. Yes. Once he survives half an hour, 45 minutes, then he is okay. So I think अभी आप देखिए कि T20 मैचेस में मैं तो कह रहा हूँ कि कोहली शुड ओपन। अच्छा जी। Because he'll be playing the new ball, he'll be batting, he should try and bat full 20 overs. 20 overs खेलेंगे उनको 100 हो ही जाएगा। उनकी टीम सर वैसे ही नहीं जीत रही। फिर उसमें आईपीएल की अगर मैं बात करूँ तो हाँ तो उसमें तो ओपन करें वहाँ पे, अब वो 3 ओवर के बाद आते हैं, 4 ओवर के बाद आते हैं, then you know प्रेशर हो जाए कि भाई depends on how good the start is. When he opens, he sets the tone, and he can play 120 balls. He can bat through the innings. If he bats through the innings, 120 balls with खेलते हैं तो 100-120 रन तो बना ही देंगे. Right. And that is how he'll find back his form. Right. Well, we like to share the final standings of the World Test Championship table, where India is at the top. So India finishes at number 1, followed by New Zealand. So that means that both the teams will be playing each other come the 18th of June at the historic Lords at London. And this has happened because India has won the series against England convincingly 3-1. And this is India's 10th consecutive series win at home under the captaincy of Virat Kohli. So we do congratulate captain for that feat as well. But looking at the wickets, Ashwin has got total 32 wickets, Venkat. 9 wickets in the first, 8 wickets in the second, 7 wickets in the third, and 8 wickets again in this fourth test match. So very consistent bowling performance. Brilliant performance, incredible. Of course, he's bowling in home conditions, and that makes a big difference. But he bowled well in Australia also, where people said he couldn't bowl, he doesn't do well in overseas conditions. But in Australia, he was a champion bowler. He's very highly experienced. Now to talk about him not taking wickets overseas is not convincing at all. It's not a good argument. He's a fine cricketer. He's improved his batting a lot. Not only has he scored 100 in this series, in Australia also, we remember the great innings he played at Sydney to save us that test match. Yes. I think he's maturing as a cricketer. Every time you see him, he surprises you with his talent, with his approach, with his aggression, and he's in full confidence and bowling at the top of his form. You see, a spinner, if he's played for almost 10 years. Yes. And he's now at his peak because he's bowling at his best. Now, how long he's able to maintain himself at this level is the point to observe. जी शेखर, एक कॉलर थे हमारे साथ जो जुड़े थे, उन्होंने एक सवाल पूछा था इंग्लैंड पे कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड सेड दैट वी आर प्रोटेक्टिंग अ गुड प्लेयर्स फॉर एशेज, सो डज दैट मीन दे आर टेकिंग अदर मैचेस ऑफ इंटरनेशनल लेवल अ लिटिल लाइटली? देखिए, ये प्रॉब्लम इंग्लैंड और के साथ शुरू से है, उनके लिए एशेज से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आप ओवर द ईयर्स देखें कि चाहे आईपीएल मिस करना हो, एशेज से पहले ही वो मिस करते हैं। अगर कोई भी बड़ी सीरीज़ भी हो, कोई प्लेयर को रेस्ट भी करना है, रोटेशन करनी है, ये उनकी परपेचुअल प्रॉब्लम है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है।
लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमीन जरूर करते हैं हमारी सीरीज़ को, खासकर ऐसे जो इतनी क्रूशल सीरीज़ थी। अगर यहाँ वो जीतते तो वो फाइनल में भी जाते, वो भी एक चांसेस थे। आपने वो डिमीन पूरा कर दिया अगर वो उस इंटेंशन की बात करें। बट आई वुड अगेन से दैट दिस वाज ए बिग मिस्टेक दैट दे हैव कमिटेड। आप पहला मैच जीतने के बाद अगर आप सीरीज़ हार रहे हैं और वो भी इस तरह से सरेंडर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्यू प्लेयर्स, कभी बटलर को बाहर, कभी एंडरसन बाहर, कभी जोफ्रा आर्चर नहीं है, तो ये चीज़ें देखिए अनफॉर्चुनेट है। और पहले ही टेस्ट क्रिकेट का तो मैं पहले ही कहता हूँ बंटादार हो ही चुका है, उसके बावजूद आप इस तरह की सीरीज़ खेल रहे हो तो ये ख़राब है। जी, तो चौथा टेस्ट मैच भारत ने बहुत ही आसानी एक पारी 25 रनों से जीत लिया है और इस समय हम चल सकते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम। The character shown by the guys. Of course, the last 3 games have been quite testing for us, and that we haven't been able to match India. But huge credit to them; they've outplayed us. And I think we've got to be honest, we've got to be realistic about things, and we've just got to keep looking to get better, keep looking to learn, keep looking to improve individually and as a group. And know that we've still got a very big year of Test cricket ahead of us. So it's really important that we become a better side for this experience and for this series, and we keep looking to evolve and move forward. If there were 1 or 2 things you could pinpoint on where it went wrong after Chennai, what would those be? I think there's a few key areas of the games where India managed to grab them and we didn't. I think you look at Rishabh's innings, for example, in this game. We felt like we were in a really good position at one stage, and credit to me, played extremely well. And that was a great partnership for him in Washington. But as what I mentioned about the character and the fight from the group, at no stage did we lie down. Of course, there were times where we could have, we maybe didn't score the runs we would have liked, or the way that we went about things could have been slightly better. But ultimately, credit has to go to India. They've outplayed us on the surfaces that we've had in front of us, and best of luck to them in the final. Was it a challenge getting the right combination of these surfaces for you? Yeah, I mean, you could say that they didn't necessarily perform exactly how we might have thought they would. But there's not a lot of history at this ground. This is the first 2 test matches here. It's a brilliant stadium. I'm sure there'll be some brilliant games in the future, for sure. But as I say, once that selection's made, once those guys get the opportunity to play, it's about trying to put in a performance. And the effort that's always been there throughout the whole tour, and you can't ask any more than that. I mean, I know these are difficult times, and we all have to cope. But did you at any point feel hamstrung by the rotation policy? Look, you can look at for excuses or different ways about it. It's where we are. It's what the world that we're living in right now. It's not going to go away. It's really important that we understand that, we realise it, and we look after our players. It's a big year of cricket. There's three formats to consider, and we can't just keep playing guys until they fall over. I think we've got to move past that. We've got to make sure that we're constantly looking at what's next as well as right now, but also most importantly looking after the players first and foremost. Your double or your 5? What are you going to take back with you? I think as a batter you pride yourself on your runs, don't you? But look, as I say, it's been a very good series. It's been we've enjoyed the hospitality, been looked after brilliantly. So on behalf of the team, we want to say thank you for that. Thank you very much. I hope India treated you well. Travel well. Cheers. Thank you. Thank you very much. What a wonderful ambassador for the game and for English cricket, the England captain, Joe Root. Now it's time for the ACC Kamal Ka moment. The winner gets a trophy and a cheque of 1 lakh. There could only have been one. Rishabh Pant with that audacious reverse flick of Jimmy Anderson. I mean, with Rishabh, you always think you've seen it all. And then there's something else that happens. I will never forget that shot. This was with a new ball against one of the greatest bowlers the game has ever seen. And it came when he was on 89. Up next, the Dream 11 game changer of the match. And he's been changing a few matches recently, and we're delighted that he's here to receive his trophy and a cheque of 1 lakh. The award goes to the very impressive Washington Sundar. We saw in Australia that he could play. We saw earlier in the series that he could play. But this innings of 96 not out, you just wondered what he was doing down at number 8, because he looked like he can bat anywhere in the order. It's mighty impressive, and we'll see a lot of this young man in the future. Well played, Washington Sundar. 96 not out.
Now it's time for the Paytm Man of the Match. The winner gets a trophy, a check of 1 lakh. After that innings that he played, could only have been Rishabh Pant. 101, just 118 balls, 2 catches, 2 stumpings. ऋषभ वो जरा नीचे रखे क्योंकि आपका माइक आपकी जेब में है. आपकी बैटिंग के बारे में तो चर्चा होगी, लेकिन आपकी कीपिंग में जो इतना जबरदस्त बदलाव आया उसके पीछे बताइए. मेरे को लगता है सर कि ड्रिल्स काफ़ी करी और जो मेन थिंग है वो कॉन्फिडेंस है कि ऐसे प्रैक्टिस कर करके इतना कॉन्फिडेंस गेन करा. बैटिंग से जो कॉन्फिडेंस मिला उसको कीपिंग पे ट्रांसफ़र करके काफ़ी हेल्प मिला. आपकी थोड़ी बैटिंग दिखाना चाहूँगा, आप देखिए, क्योंकि इसमें ऐसे अद्भुत शॉट्स थे, बड़े कॉन्फिडेंट शॉट्स भी थे, और कुछ ऐसे थे जब लगा सब कुछ देखा ऋषभ पंत का, कुछ और नया शॉट दिखाया आपने. तो इस इनिंग्स आपने इतनी बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली है इतने छोटे से करियर में, ये कितने मायने रखती है आपको? सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर सिचुएशन ऐसी हो जैसे टीम अंडर प्रेशर होती है. फाइनल था, अगर मैच ड्रॉ होता तो भी फाइनल था, बट टफ सिचुएशन में फंसे हुए थे, 5-6 विकेट डाउन थे. उस सिचुएशन में अगर आप टीम के लिए कुछ ऐसा कर सको जिससे मैच अपनी तरफ आ सके तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है. रिवर्स फ्लिक दोबारा करेंगे आप 89 को? अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगा सर. आप जब हम देखते हैं आपको, ऐसा लगता है कि ऐसा कोई लड़का है जो बहुत एंजॉय कर रहा है अपनी क्रिकेट, मुस्कुराते हुए खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है, उसका राज बताएं आप. सर बचपन से यही सोचा था कि जो भी क्रिकेट खेलनी है एंजॉय करके खेलनी है और हंस के खेलनी है. आसपास लोग हंसते रहे, बस यही काम है. खुद हंस के टीम जीतते रहे, यही सोचते रहते हैं. आपकी वजह से हमको एक क्रिटिसिज्म मिल रहा है बहुत कि जब आप स्टंप्स के पीछे हो कहते हैं कमेंट्री बंद करना, ऋषभ की बात सुनो. अब सर अब ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है या आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नहीं, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है, कोई बात नहीं. वेल प्लेड ऋषभ पंत, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. मैन ऑफ द मैच टुडे वाज ऋषभ पंत. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर. Now it's time for the Paytm Man of the Series, someone who's making it a habit of doing that. A trophy, a check of 2.5 lakhs, 32 wickets, a century, 189 runs. Ladies and gentlemen, Ravichandran Ashwin. He'll come eventually. He's got so many things to pick up. It was so much fun watching Ravichandran Ashwin ride through. You never knew what he was coming up with next. There's a trophy, there's the check, but also, you can come a little closer, we'll keep enough distance, but also a microphone that he's been using very well these days. Of all the things you did in the series, what gave you most satisfaction? The fact that we've qualified for the World Test Championship final, because at the start of the series, we came from a real high in Australia, and then we lost that first test in Chennai. The intensity was sort of very low, and we would say that the penny hadn't dropped, and after that we had to pick ourselves up and win 3 on the bounce. And these were challenging passages of play in the series, and I thought every time there was a challenging passage of play, someone stood up and put their hand up and delivered for us. So it was one of the good series wins that we've had in the last few years. It's going to be very enjoyable watching this little sequence we've put together. 32 wickets and 189 runs. It's a series to remember, isn't it, for you? It is. I've been saying this. I actually can't really put thought into it and say how well the last 4 months have been, because for me the last 4 months has been quite a ride. Like I said, I haven't been in the best of form with the bat, and when the time came in Chennai, I didn't really think I was going to make 100. I just went with the flow, stayed in the moment, and things just happened. It's not just this, but even the series in Australia, it's been quite a ride. Now I'm going to sit back and sort of think about what's happened. With every series, you plan differently. You prepare a certain way, you prepare for certain outcomes. What had you prepared for before this series? Now that it's over, you can share it with us. No, honestly, I think what's really made the difference is the kind of confidence that the team management has put in me over the last 4-5 months. Because when I reached Australia, I didn't look like a starter. I was not going to start in the 11, and I just went there trying to put my best foot forward. I was training for the best possibilities and best opportunities that I might receive through the season. But Jadeja's injury, I mean, it is not the greatest of things, but both Ravi Bhai and Virat did say that the bowling was coming out really nicely, and they wanted me to go out there, enjoy my batting, just put bat on ball and just go about things. And
I feel totally blessed and humbled because after the COVID situation, I never thought I would play cricket again for some time, and here I am, having had one of the best months that I've had in my career. You've talked often about being happy these last 4 months. How does that translate into performance? Happy versus, I mean, you've had great performances before as well. Look, sometimes I think the line needs to be drawn between being happy, content, and also being a little desperate. These are very, very, very fine lines, and it can be separated with a lot of thought process. Being desperate is one of the worst situations that you want to be as a cricketer. Being content is also not the greatest, but being happy is very, very important for me. Being happy keeps me in the moment, keeps me in the process, and keeps me with the planning. I go back every single day. Even yesterday, I was watching footages of how I can overcome how the batsman batted in the first innings, because every pitch is different. Every situation is different. Need to plan accordingly and deliver accordingly. So for me, this is where I find myself in. I would just love to live through this. I want to ask you specifically before you go away about two partners of yours. One at the other end, Akshar Patel in his first series, 27 is a lot of wickets in your first series, and the person behind the stumps whose performance has been fantastic. If you put a board about what Rishabh has gone through in his career over the last year or so, it's been amazing. I can't be any more happier for someone. He's been under a lot of pressure, being compared to some of the legends of the game, and sometimes it's quite unfair on a youngster. You know, sometimes he's come out and told me, Ashbhai, yaar, I take these catches and take these stumpings so often in my club cricket or so often in the IPL. And it's just that he's got that right passage of play, right momentum, right amount of confidence, and the way he's kept in the series is beyond excellence, and I'm so pleased for him, so happy for him, and I hope he can continue delivering the kind of performances he did for us this game. He's a rock star. What about Akshar? Look, I think Akshar is someone. Okay, we'll keep it short. Right, tell me in 2 lines about Akshar Patel. We'll get Virat. It's hot out here. So Akshar basically is someone who came in to replace Jaddu's positioning, and I thought he delivered really well for us. Deserved every bit of praise that he got through the series, and I thought his bowling was also excellent. Very, very accurate for a first series. Well done, Ravichandran Ashwin. 8th time man of the series. Well played. Now it's time to invite the winning captain. And what a moment it is for Virat Kohli. He'll collect the Paytm India versus England Test Series trophy. Virat, you want to collect the trophy? We'll do that after the interview. Come along. I know it's hot. You've got a cap. I don't. I've got a blazer as well. But tell us, Virat, about all the things that happened in this series. What pleased you most post the comeback in Chennai? I think the comeback pleased me the most. I think the first game was a bit of an aberration in the way that we play as a team, and that was just a hiccup, and I think England outplayed us. The toss became very crucial because of the way the pitch played in the first 2 days. I don't think the bowlers were in the contest at all. So from the next game onwards, it was more exciting cricket, and we got into the game early. Even in the second innings in Chennai, I think we bowled and fielded with a lot more intensity. So for me, the comeback was way more pleasing, and the way we batted in that second test match in Chennai. It's incredible how the youngsters coming into the team are performing straight away. I mean, Rishabh has been around for a while, but in this series, he was just sensational. There's Washington, there's Akshar. They just come in and look like they're ready. Yes, they are. Our bench strength is as strong as it's ever been, and that's a great sign for Indian cricket. The idea was exactly this, to have youngsters who come in and perform with fearlessness, take the situations on, so that when the transition happens eventually, it's not difficult for Indian cricket, and the standard doesn't fall below what we have set in the last few years. So I think it's up to the individuals as well, taking the situation on like Rishabh and Washi did with that game-changing partnership, and then with Akshar as well, a 100-run partnership. These are the kind of situations where individuals stand up and say, okay, I'm going to make a mark and make a name for myself, and be that player who can be counted on, and that's exactly what they've done. 13 series win on the trot. Does it leave you any concerns at all, or everything fine? You're happy with the way things went? Well, you're obviously happy when you're winning so many series, but there are always things to improve. Like after the first game in Chennai, we had to pick up our body language. We spoke about the fact that nothing's a given whether you're playing at home or away. Just how we work hard playing away from home, you have to work hard to win at home as well, because every team at international level is a quality side, and we need to be at our A game to be able to beat them, and that's exactly what our mindset is. And I know in the future as well, we'll have hiccups, we'll have few things that will be of concern, but we'll have to keep ironing them out, and that's been the hallmark of our team. Before I finish with you, just a couple of performances I want you to talk about. One was, of course, what I thought helped in changing the way the series was going, Rohit's 100 in Chennai.
and Ashwin just coming in and delivering every time you wanted him to? Well, Ashwin's obviously been a banker for us, in the past 6-7 years in Test cricket. His numbers speak, volumes of what he's done in the last few years. But I think, yeah, as you rightly pointed out, I think Rohit's knock was the defining moment in us coming back into the series. Getting 160 on that pitch is as good as a 250 on any good batting wicket, and I think it's definitely one of his best Test knocks, if not the best, and that gave us the kind of momentum we needed as a side, and really got us into the contest. So yeah, it was an outstanding innings, and he batted really well at the top of the order throughout the series. He gave us important knocks, important partnerships as well, which is unnoticed when you don't get those three figures, but he got one, but the other knocks as well were very, very crucial for us. Mind drifting at all gently towards a World Test Championship, or not yet? Well, now we can accept and admit that we are in the final. It was more of a distraction till now for us, because we are a side that's very committed to playing Test cricket, and all these extra things can be a distraction for us. There was never a question of commitment or whether we're going to go for a win or not. It did become a bit of a distraction for us in New Zealand, but from then on, it was just focus on one game at a time, and now we are in the finals, which we can't wait to be a part of. Right, the city that's always supported cricket. Look at the crowd. Just give them a wave as you go and pick up the trophy that you worked so hard for. There you go, Virat Kohli, champion cricketer, now with the trophy that they worked so hard for, the Paytm Test Series. So India captain Virat Kohli has lifted the trophy as celebration and joy is in the air. And what a proud moment this is, Shekhar. And nice to see captain and everyone happy and smiling. Definitely. And after such a pressure, going through the pressure, that particular defeat, big defeat, I think, in Chennai, first match, you had to lift your spirits, and that's what exactly they've done. But again, the championship final is going to be a very different ball game, different venue, neutral umpires, neutral venue, and then a team which is again is not going to leave it to the other factors. They want to win it. They have lost the World Cup final there, as I have said. They want to win it at any cost. Venkat, in the morning we were discussing about how do you mentally train yourself, and Ravichandra and Ashwin said something really beautiful, that you cannot be content and you cannot be desperate either. You need to be happy. You need to be in the moment and enjoy the process. Well, he's right. When you play cricket, you're going to get days when whole world will be against you. Nothing goes right. Even the food you eat, you may not be able to digest. So, and there are days when everything runs for you. Reverse sweep of the fast bowler, everything goes in your favor. So now, between these two extremes, you have to be mentally ready to accept. As I said, as Kohli said, we're learning from every game. Just because you won this series doesn't mean you're going to win the WTC championship. So you have to plan for that, you have to think right, you have to be in the moment. He said you have to be in the moment. That's a very important thing. That means you forget the past. Past is past. It's of no use. If you learn from the past, especially the mistakes you made, then you improve, right? And if you improve, you can perform better than this. So there's always a raising of the bar. आप जब तक अपने ऊपर चैलेंज नहीं रखोगे और अपने से लड़ोगे नहीं, आप अच्छा इंप्रूव कर नहीं सकते. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर अपने मुश्किल समय को याद करें, उसमें आपने क्या गलती करी. इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मेंटल टफनेस, मेंटल एग्रेशन, मेंटल प्रेशर एंड हाउ टू हैंडल दिस. दीज आर द थिंग्स. तो ये कोविड सिचुएशन भी है, ये भी एक प्रेशर है. आप फैमिली से दूर हैं, आप बबल में हो, हाउ टू हैंडल दैट. अभी आप फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, अब ऑस्ट्रेलिया में भी टुक अस टाइम, वी वेंट वेल इन एडवांस एंड एक्लेमेटाइज. तो यहाँ पे भी हो सकता है हम फाइनल के लिए थोड़ा जल्दी जाएं, लेकिन हम उतना जल्दी नहीं है क्योंकि आईपीएल है. तो आईपीएल भी जून तक चल रहा है, तो उसके तुरंत बाद ये एक हफ्ते के बाद है, तो यू मे नॉट गेट प्रैक्टिस मैचेस देयर, यू मे नॉट बी एबल टू एक्लेमेटाइज. ये सब चैलेंजेस हैं. और एक और चीज़, इन जर्नलिज्म ऑल्सो देर आर टाइम्स लाइक फॉर एवरी बडिंग जर्नलिस्ट व्हेन वी वर यंग, there used to be a time when you are not getting stories, and initially what happens, you break one or two good stories and then try and ride on it. But after a while, when you don't get stories, there is a lull period, and that's where your testing time is. So you are as good as your last byline. It is always there. You have to live in the moment. You have to accept that there are going to be times which will test you, but there has to be nose for the news. So nose for the news, nose for the good wicket, or probably the good moments. And both Shekhar and Venkat have nose for the right man of the match and series as well, and rightly predicted.
इस पूरी श्रृंखला में 32 विकेट और 189 रन बनाने के लिए मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन के नाम गया। और इस मैच में ऋषभ पंत ने जो 101 रनों की पारी खेली, 118 गेंदें, 13 चौके, 2 छक्के, और खासतौर पे नई गेंद जब आई तेजी से रन बनाए, और एंडरसन का जो रिवर्स शॉट खेला था, और साथ में विकेट कीपिंग का भी जो आप इशारा कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन वो आंसर भी बहुत अच्छा देते हैं, कितने भी उनसे आप सवाल पूछें, लेकिन ऋषभ आंसर भी ह्यूमरस और बढ़िया आंसर देते हैं। वो मैच्योर हो गए, दुनिया देखी है, उनको जवाब देना आता है। तो ये सब एक स्पोर्ट्समैन, एक अपकमिंग स्पोर्ट्समैन के लिए ये भी है, हाउ टू हैंडल मीडिया, हाउ टू हैंडल सक्सेस, हाउ टू आंसर स्मार्ट क्वेश्चंस। आप भी हमसे बहुत स्मार्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ, तो हमें भी जवाब देना आना चाहिए ना। उससे ज़्यादा स्मार्ट तो आंसर्स हमें मिल जाते हैं हमें। और इसी के साथ अपने स्मार्ट कॉलर्स से बात करते हैं, देखते हैं कौन हमसे बात करना चाहता है। हेलो, नमस्कार मैडम, मैं मुनिराज बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मुबारक की बात आपको भी। जो रविचंद्रन अश्विन है वो मैन ऑफ द सीरीज बने और मैन ऑफ द मैच रहे ऋषभ पंत, कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, बहुत बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है। ऋषभ पंत हर मैच में खेलना चाहिए, बहुत उसके अलावा तो मैच देखने का मजा भी नहीं आता, और विराट कोहली कैप्टनशिप में बने रहना चाहिए। जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए। अब तो खेलेंगे। जी तो बिल्कुल, यहाँ पे अब जो है निगाहें श्रृंखला के बाद T20 की तरफ जाएंगी। तो वेंकट, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 12 मार्च से T20 मुकाबले शुरू हो रहे हैं, 5 T20 मुकाबले हैं, और सबसे पहले तो आकाशवाणी के श्रोता ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या आंखों देखा हाल सुनने को मिलेगा? मिलेगा। क्या विशेष कार्यक्रम आएंगे? आएंगे। और टाइम भी नोट कर लीजिए, क्योंकि शाम को 7 बजे खेल शुरू होना है, तो उससे आधा घंटा पहले यानी 6:30 बजे शाम शुक्रवार 12 मार्च को आप आकाशवाणी से जुड़ जाइएगा। मीडियम वेव पर भी आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा। विशेष कार्यक्रम होगा, जो कार्यक्रम मैच से पहले, उसका नाम है फर्स्ट बॉल T20। कनिष्का, आप भी तैयार हैं उस? जी बिल्कुल, फर्स्ट बॉल को एकदम अटैकिंग तरीके से खेलेंगे। लेकिन T20 का जो स्क्वाड है और उसमें जो परिवर्तन है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 3 अनकैप्ड खिलाड़ी वेंकट जी टीम में शामिल हैं, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और राहुल तेवतिया। ये सारे IPL में अच्छा खेले। आई एम वेरी हैप्पी कि सूर्यकांत यादव को मौका मिल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ वो मौका का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत कंसिस्टेंट खेल रहे हैं। बॉम्बे के लिए बहुत परफॉर्मेंसेस दिए उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में, और मैं सोचता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया टूर में भी होना था उनको। वेरी अनलकी टू मिस दैट टूर। इतने रन बनाए थे और तब भी बाहर बैठे हैं, लेकिन अच्छा है, इज़ अ टफ क्रिकेटर, काफ़ी साल से खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, और परफॉर्मेंस भी है हर जगह। और मैं उम्मीद करता हूँ, बाकी जो है ईशान किशन, ही इज़ ऑल्सो विकेट कीपर बैट्समैन, वो भी लेफ्ट हैंडर है, और ऋषभ भी वापस हैं T20 में। हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन खेलेगा या नहीं खेलेगा, क्योंकि उसमें मौका जरूर मिलेगा वैसे मैं तो। और इंग्लैंड इज ऑल्सो गुड टीम इन T20, दे आर अ वेरी डेंजरस टीम। ओके, दे कैन सरप्राइज यू ऑन देयर डे। ओके, तो देयर विल बी कंप्लीटली न्यू टीम फॉर T20। इयन मॉर्गन विल प्रोबब्ली लीड देयर टीम। इस टीम में से कई प्लेयर्स बाहर होंगे और कई नए लड़के जुड़ जाएंगे, तो और उनमें से कई प्लेयर होंगे जो IPL में खेलते हैं, इंग्लैंड प्लेयर्स। जी तो शेखर, बस हमें समाप्ति करना है। हम भले टेस्ट सीरीज 3-1 से जीते हैं, T20 एकदम डिफरेंट बॉल गेम होगा। डिफरेंट बॉल होगा, विकेट्स डिफरेंट होगी, बड़े स्कोर चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजर ये नहीं चाहता कि लो स्कोरिंग मैचेस हो, बड़े छिक्के, बड़े चौके, ये सब चाहिए। और ईशान किशन का जरूर ध्यान आपको रखना चाहिए। वो एक ऐसे एक्साइटिंग प्लेयर है जो कि ऋषभ के बाद, अगर किसी की बात हो रही थी जब ये अच्छी कीपिंग नहीं कर रहे थे, हम भी यहाँ पर बैठकर बात कर रहे थे, नेक्स्ट टारगेट वॉज ईशान किशन, कि इन दोनों में से कोई एक सेट होगा टीम के अंदर। अब जबकि ऋषभ तो मुझे लगता है काफ़ी टाइम के लिए हो गया, नाउ इट विल बी ए चॉइस फॉर T20s एंड वनडेज कि कब किसी को रोटेशन पे लाएं। तो ही इज़ अ वेरी एक्साइटिंग विकेट कीपर बैट्समैन, और सबको देखना चाहिए, बहुत ही अच्छे प्लेयर है जी। और बस अब मैन ऑफ द मैच में हमने बहुत खुशी जो है वो ग्रहण कर लिया है। मैन ऑफ द सीरीज रहे मेरे फेवरेट रविचंद्रन अश्विन, और मैन ऑफ द मैच रहे सबके फेवरेट फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देने के बाद ऋषभ पंत। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम धन्यवाद करना चाहेंगे चंद्रशेखर लूथरा जी का और वेंकट सुंदरम जी का। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद आने के लिए, भारत को जिताने के लिए। और पूरी श्रृंखला में आकाशवाणी के श्रोता हमारे साथ बने रहे, तो आपका भी बहुत बहुत आभार। उम्मीद है कि इस पूरी श्रृंखला का आपने आनंद लिया होगा। आकाशवाणी इसी तरह से क्रिकेट और अन्य खेलों की कमेंट्री आप तक पहुंचाता रहेगा। आप भी लगातार हमें अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। फिलहाल कनिष्का त्यागी आपसे कुछ कहना चाहती हैं? जी मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए, जैसे आप क्रिकेट के साथ जुड़े रहिए। और कनिष्का आप भी आते रहिएगा। और हम आएंगे अब 12 मार्च शुक्रवार को। याद रखिए, पहला T20 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड
हम आपके साथ होंगे शाम